Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll start our subject financial accounting 2. This is mostly about um, uh, um, treating different type of assets, liabilities and owner equity in financial records of the company. So how we will be doing this? First of all, I'll be giving you introduction about financial accounting, and after that we will be discussing about cash, how we will record cash, account receivable, inventories, and certain aspects of liabilities, and also your owner equity. So starting with the introduction of financial accounting, that is a financial accounting. So first of all, we see that it's a field of accounting that treats money as a means of measuring economic performance instead of as a factor of production. As in economics, we have discussed different factors of production, and money is one of the factor of production. But over here, what we will discuss is that how you can measure the performance of any companies. And mostly as when we talk about financial accounting, so the financial accounting is mostly related to preparing accounting records for external users of financial statement, like those people who are interested in investment in the business, or the people who want to give credit to you, or the people whom you want to go for a credit. So all these are the people who provide funds for the organization, and you will be there to provide them with financial statement, which will help them to assess your financial performance, or your financial stability, and or your result of operations. So mostly financial accounting is related to recording, summarizing and reporting the rate of transaction from a business. And obviously when you are arranging all these records, you want to provide an accurate picture of your financial position and performance to your external users of your financial statement. Like जब हम इसमें बात करें ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मेजरली हम अकाउंटिंग को तीन फील्ड्स में डिवाइड करते हैं. एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक मैनेजरियल अकाउंटिंग है, एक टैक्स अकाउंटिंग है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि आपके जो भी आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो इस एस्पेक्ट में बना रहे हैं कि आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो उसको यूज़ करेंगे. एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग जो आपको पैसा देना चाह रहे हैं एज इन्वेस्टर, या वो लोग जो आप जिसके पास आप जा रहे हैं क्रेडिट जो है वो लेने के लिए. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने फाइनेंस जो है वो जनरेट करें. सेकेंडली, आपकी जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है वो इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी पिक्चर दिखाने के लिए बनाई जाती है. फिर टैक्स अकाउंटिंग है, जो टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली आपकी वो भी एक टाइप ऑफ इंटरनल ही अकाउंटिंग है, जिसमें आप जो है वो अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने के लिए उसको जो है वो यूज़ करते हैं. सो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड भी करते हैं ट्रांजैक्शंस को, समराइज भी करते हैं और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं. और वो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें और उसको अच्छे तरीके से असेस कर सकें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को. Now, as I've said, that financial accounting is a subset of the general field of accounting that focus on gathering and compiling data in order to present it to external user in a usable form. Like it should be like that it should be used by external users, and that readily all the information is available in that, and they can easily interpret your financial stability and many other aspects of your finance. Then this financial accounting, the main purpose is that they want to provide useful financial information to the people or the groups of the people outside the organization, who are basically called as external users. And external users are not only limited to your investors and owners. There are many other external users like your regulatory bodies, like your suppliers, your customers. All these are interested in your financial information. So they will provide information to all the external users of the organization. And
when we talk about managerial accounting is actually being used in within the organization, and it will provide information to internal users, because external users are not directly involved in the running operations of the business. They are not involved in that. They are actually outside people, and they are only they have only access to the limited information about the companies, what is actually available in your financial records, and what is available to the general public. So they can help they can use this financial information in a form of balance sheet or in a form of income statement, in order to see the financial position of the organization, or in order to see their operations, because these external users are interested in many aspects. Like if we talk about investors, so they are very much interested into your profit, that what amount of cash flows and profits you are generating, because they want to become part of your ownership. So that's why they want to see the your information. Secondly, there are creditors who want to see that whether the person who is or the company who is acquiring the funds from you is able to pay back the money they are acquiring or not. And regulatory bodies are interested to see that whether you are compiling with all those, or complying all those rules and regulation which they have formed. So all these people are interested in order to see that whether you are fulfilling all the necessary information, or all the necessary requirement for related to your फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो जब हम इसके बात करें ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो एक सबसेट है अकाउंटिंग की फील्ड का, जो एक और इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन किस तरीके से बना के दें कि वो उसको बेहतर तरीके से यूज़ करें. क्योंकि आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको बहुत एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंटरनल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो इसमें चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको ही वो यूटिलाइज करते हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस, बेसिक पर्पस ये है कि वो जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको आप इस तरह यूजेबल फॉर्म में रखें कि वो उसको देख के अच्छी तरीके से उसको असेस करें. Now, the main objective or the primary objective of financial accounting is to prepare financial statement. These statements are your balance sheet, which will provide information about the financial position of the organization. Secondly, there is income statement, which provide about the profit and loss and all the necessary expenditure. Like it's the information, it's the statement which will provide the results of operation of the company. And the third one is your cash flow statement. Actually, cash flow statement is the statement which provide the different type of cash flows coming within the organization, and the net cash present available to the business. So all these information will be helpful for the users to see that what companies are there for investment, and what companies are eligible for granting credit, and so on. As these statements are prepared mostly prepared annually, but there are certain companies who also prepare these statement on monthly or quarterly basis. It depends upon your regulatory body. Like when you are preparing your financial statements or your accounting records according to GAAP principle, so they are actually required that you have to prepare these statements once in a year. And these are actually statements which are actually being prepared, and these are being prepared for external parties like investors and creditors, and also the regulatory and tax authorities as well. The firms actually provide this information to these shareholders and loan creditor, because these both parties are very much important. Shareholders want to invest their valuable money, they want to put their saving into your organization. So it's very risky to put that information to those companies who are not very reliable. So you can get their information with the help of these financial statement, which is being prepared to the help of financial accounting. And also the same cases with loan creditor, because they are very much interested in seeing the cash flows of the company. They want to see the credibility of the company, they want to see the default risk of that company. So without reliable information, it's very riskier for the companies to grant capital to grant capital to certain businesses. So
then when you provide these information, these lenders and these shareholders compare different financial statements of different companies and find out that who are the companies which are eligible for granting credit or making investment. So आप इसमें देखें कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दैट इज़ कि आप उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। बैलेंस शीट आती है जो आपको आपकी कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी की सिचुएशन बताती है। बेसिकली ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कितनी वेल्दी कंपनी है। फिर आपको इनकम स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि आपकी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करी है, कितनी वो प्रॉफिट कितना लॉस करी है। और थर्डली वो ये देखती है कि कैश की फ्लो की क्या पोजीशन है, वेदर वो जो कैश आपके पास अवेलेबल है उसमें ज़्यादा पोर्शन आपका ये तो नहीं है कि आपने एसेट्स बेच के पैसा जनरेट किया या आपने कोई डेट लिया है, वेदर वो आप किस तरह का कैश फ्लो जो है वो अवेलेबल है। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ये देखना है कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने रिकॉर्ड किया है ये गैप प्रिंसिपल के अंडर रिकॉर्ड की गई हो, क्योंकि अगर ये गैप प्रिंसिपल के अंडर रिकॉर्ड की गई है तो ये अब बाकी जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी पे जो है वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। सो उसको आप देखते हैं। प्लस आपकी जो इन्फॉर्मेशन जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके शेयर होल्डर्स और लोन क्रेडिटर्स हैं, ये देखते हैं कि आपकी मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं, कौन कौन से जो है वो आपके लोन अक्वायरर्स हैं। फिर ये उनमें कंपैरिजन करते हैं और जो भी बेस्ट प्रॉस्पेक्ट होता है या आपको लगता है कि जी ये बंदा है जो रिलायबल है, ये कंपनी है जो रिलायबल है, उसको लोन देना चाहिए, या ये कंपनी है जो बहुत रिलायबल है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं बीइंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सो वो आगे फैसिलिटेट करती है और ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स को फैसिलिटेट करती है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी फैसिलिटेट करती है और ये टैक्स अथॉरिटीज़ को भी जो हैं उनको भी ये फैसिलिटेट करती है। Uses of financial accounting. There are many uses of financial accounting, as we have mentioned before that these are shareholders or investor, because shareholders and investors are the people who are interested into the assets of the business and who want to see that how the company is increasing its wealth. So these are usually are the first group of external user, and they actually generally want to see the value of the firm in order to decide whether it is worth buying, selling or holding their stocks. So in order to do that, they'll see the financial statement of different companies, and and based upon their information they'll predict the future performance of that company and obviously the worth of that company, and after that they'll decide that whether they should invest in that company, whether they should buy the shares of those companies or not. Secondly, there are certain lenders or creditors who provide funds to the company, and they also use financial statements to see that whether the people who are acquiring funds are credit worthy, have credit worthy, or whether there is default risk or not in granting credit to those companies or those individuals. So they base their decision by seeing the financial statements of those companies, and they'll see that whether the company is able to pay back their debts, and they'll see the cash flows of the company, future cash flows of the company, whether the company is in a position to pay interest on regular daily basis, whether the companies are able to pay back the whole amount they have borrowed at a specified date or not. So they see the financial stability, liquidity and sustainability of the company in order to secure their loans. So जब हम users की बात करते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, so दो मेजर जो यूजर्स हमारे जहन में आते हैं वो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं। ये शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपना वैल्यूएबल सेविंग जो है वो किसी कंपनी में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ओनरशिप जो है वो लेना चाहते हैं। सो वो मुख्तलिफ कंपनीज़ को देखता है कि वो उनकी दिल सी के देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, कितने एसेट्स उनके गिरवी पड़े हैं। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अपने डिसीजन को देखते हैं कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी और कितना ज़्यादा वेल्थ जनरेट करेगी, और फिर उस बेस पे वो फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर्स वगैरह परचेज़ करते हैं। सेकेंडली इसी तरह जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर आप जनरली भी देखें तो किसी को भी जब आप कर्जा देखते हो तो
आप ये ज़रूर देखते हो कि बंदा जो है वो इस काबिल है कि फ्यूचर में आपको पैसा वापस कर दे या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो यहाँ पर जो है वो आप देखते हो कंपनीज़ का कि कैश फ्लोस क्या है उनकी, फ्यूचर में वो कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, वो इस पोजीशन में हैं कि वो आपके जो है वो इंटरेस्ट दे सकें, वेदर वो इस पोजीशन में है कि वो पूरा पैसा उन्होंने जो आपसे लिया उसको वापस कर सके या नहीं। सो इन तमाम चीज़ों को आप देखते हो। Another group of financial statement users or financial accounting users are your customer, and majority of time these are your these customers are your business customer. Like for example, if you take an example of GM company, and if they want to buy a certain supplies from any supplier, so they see the financial statement of their potential supplier in order to see their financial stability and whether they see that they are financially sound, because they want to have a stable flow or supply of certain inventory or certain goods. And also they want to build a long-term relationship with their supplier. So in order to do this, what they'll do is they'll see their financial statement, to see their financial health, to see their results of operation, and based upon that they'll make their decision. Secondly, there are suppliers. Obviously there are suppliers are there to see the financial statement of their customer, because many times you provide, their suppliers provide you trade credit. So obviously they'll see that whether the company is in position to pay their debts or not. Like if customer orders 1 lakh units from supplier, the supplier want to know whether the customer will be able to pay for that units or not. And obviously the supplier have to incur certain amount of expenditure in producing those goods. Not only that, they have to incur expenditure on maintaining the records of your accounts payable or notes payable. So they'll see that whether your customer are in a position to pay back all the amount due or not. So अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट तरह के और हमारे पास यूजर्स हैं। एक तो कस्टमर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम ज़्यादातर जो बात करें हैं वो बिज़नेस कस्टमर्स की बात करें। यहाँ पे इन्होंने जीएम की एग्जांपल जिस तरह दी है कि एक कंपनी है जीएम जनरल, तो उसमें अगर आप देखें तो जीएम कंपनी ये देखेगी कि एक ऐसे सप्लायर्स के पास जाएं जो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी एक सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए। ये ना हो कि आप उसे सप्लाईज रहे हो और विद द मिड ऑफ टाइम उनकी बिजनेस बंद हो जाए और वो आगे आपको सप्लाई ना कर सके। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह ऑन द अदर हैंड जो सप्लायर्स होते हैं, जब वो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स वगैरह देते हैं, ट्रेड क्रेडिट वगैरह देते हैं, और अगर आपको एक कस्टमर जो है वो बड़े ऑर्डर्स दे रहा है, तो उस चीज़ को आप देखते हैं कि वो इस पोजीशन में है कि वो आपको पैसा दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। सो उसके लिए भी वो फाइनेंशियल आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि आया कि ये कंपनी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो हमारा कर्जा दे सकेगी कि नहीं दे सकेगी। सो ये भी एक पोटेंशियल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। Now, other users are regulators like SEC, like Securities Exchange Commission of Pakistan, who are responsible for regulating all the companies who are registered in Securities Exchange Commission of Pakistan, and FBR actually are a Federal Board of Revenue, who are responsible for collecting taxes from the people. So they use financial statements of the company to see that whether the companies are following all the laws, applicable laws, whether they are complying with all the regulation which are being given by these regulatory bodies. So these SECP monitor publicly traded companies to reduce fraudulent business activities, whereas FBR is mainly focused on collection of taxes and its compliance. Secondly, we have unions, like mostly they are labor unions. They use financial information to see that whether the employees are getting fair wage rate, or whether the benefit which are being availed by the companies are being transferred to the laborers or the workers. So they'll see the benefit packages and they'll see that whether they are fair enough. Then they also use this information to assess the future job prospect and bargain for higher wages and better benefit. So these two agencies are also very important. Like अगर हम regulatory bodies को देखें तो पाकिस्तान में जो regulatory bodies जो main है वो आपकी Securities Exchange Commission है of पाकिस्तान है, और FBR है जिसको हम Federal Board of Revenue
रेवेन्यू कहते हैं। ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन को देखती हैं कि वो जितने भी कानून बनाए गए हैं इन बॉडीज़ ने वो उसको पूरा कर रही हैं या नहीं कर रही। आपकी SCCP देखती है कि जो जितनी भी आपकी पब्लिक कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो कोई ऐसी मतलब फ्रॉड वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बैंकरप्ट हो जाती हैं या वो जो है वो डूब जाती हैं, तो जितने भी लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया वो भी डूब जाएगा। वेयर एज जब हम FBR को देखते हैं तो उनका मेजर पर्पस ये है कि आप वो देखते हैं कि लोग प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और प्रॉपर्ली टैक्स कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जितने भी नए रूल्स बनाए हैं लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट यूज़र है वो आपके यूनियंस हैं, जिसमें मेजरली जो हम बात करते हैं लेबर यूनियंस की बात करते हैं। ये लेबर यूनियंस जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की देखते हैं, और ये देखते हैं कि जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वेज दे रहे हैं, वेज रेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उनका जो बेनिफिट पैकेजेस है वो उसके मुताबिक है या नहीं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन कौन सी जगह पर आपको अच्छे जॉब्स मिलेंगी, प्लस फिर अगर आपको मिल जाती हैं तो फिर आप हायर सैलरीज़ के लिए वो किस तरीके से आप जो है वो बारगेन करेंगे और अच्छे बेनिफिट्स को यूटिलाइज करेंगे। Now, other users are your brokers and analysts. These broker analysts are actually most of the time are potential investor, because they use information about different companies and they see their charts, trends, and their different growth rates. And these external users create reports that influence current investor option and actions. Because majority of time these brokers are there who are responsible for making investment or buying and selling of different stocks, and obviously analysts are there will guide the investors and external users to make their investment. So obviously this information is also important for these users as well. Then another party is your press. Your press is actually the last most potential external users, because they actually they don't use information in order to make decision. They are actually there to disseminate information about the companies. They make different reports on the financial information of the companies, and based upon that people they make their decision. There are different networks like Yahoo Finance, MSN Money, and many other networks and journals and different type of newspapers who take this information and makes report of different types in order to help investors and other users to make their decisions. Like अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना ब्रोकर्स और एनालिस्ट, तो ब्रोकर्स और एनालिस्ट जो है ये एक और भी यूजर्स हैं जिसमें आप वो कभी कभार ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे ब्रोकर्स आपके जिस तरह होते हैं, तो आपकी जितनी ब्रोकरेज कंपनीज हैं उधर बैठे हुए होते हैं, लोग ज़्यादातर आजकल डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, वो उन ब्रोकर्स को इन्वॉल्व करते हैं और वही फिर उनके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। सो वो भी आपकी मुख्तलिफ कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एनालिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की परफॉर्मेंस देते हैं और अपने जो है वो फ्यूचर का बारे में आपको बताते हैं कि क्या फ्यूचर में कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी नहीं ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी क्या अच्छी पोजीशन जा रही है, सो ऑन। तो वो उस चीज़ को इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि लोगों को गाइड कर सकें। सेम प्रेस भी इसी तरह है, क्योंकि प्रेस एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करके कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करती। प्रेस का बेसिक पर्पस ये है कि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसकी यूज़फुल रिपोर्ट्स बनाए, उसको मतलब पब्लिक करे, और फिर वो पब्लिकली जो है वो लोगों को अवेलेबल हो इंफॉर्मेशन, और वो उसको अपने लिए यूज़ कर सकें डिसीजन मेकिंग के लिए।